Dear students, Indu Sharma this side, and I hope you liked my English translation and you will find it very beneficial in your studies. So today I will explain to you the second and last part of Bade Bhai Sahab. By translating it into English, you read in the first part that the author respects his elder brother Sahib but could not change his habits of playing, and in spite of this he remained in his class comes first, and yet he has to fall prey to his Bhai Sahib. सालाना इम्तिहान हुआ, भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया, और मेरे उनके बीच में केवल 2 साल का अंतर रह गया। जी में आया भाई साहब को आड़े हाथों लूं। आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई? मुझे देखिए, मज़े से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूँ, लेकिन वह इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्मसम्मान भी बढ़ा। भाई साहब का वह रौब मुझ पर न रहा। आज़ादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत था। अगर उन्होंने फिर मेरी फजीहत की तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया। मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। जबान से यह हेकड़ी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वह आतंक मुझ पर नहीं था। भाई साहब ने इसे भांप लिया। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी, और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा, तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूँ इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हें दिमाग हो गया। मगर भाईजान, घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा। तुम्हारी क्या हस्ती है। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा। उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया, या यूं ही पढ़ गए? There was an annual examination. Brother failed and I passed and came first in the rank. There was only a gap of 2 years between me and him. I came in my heart I should take a dig at my brother. Where did that penance of yours go? Look at me, keep playing with fun, and I am also on top of the rank. But he was so sad that I felt deeply sympathetic to him, and the thought of sprinkling salt on his wound felt shameful. Yes, now I have some pride in myself, and my self esteem also increased. That pride of Brother Sahib did not remain on me. Freely started participating in sports. The heart was strong. If they hurt me again, then I will say clearly, which arrow did you shoot by burning your blood? I have come first in the rank while playing and jumping in spite of not having the courage of express this arrogance with my tongue. It was clearly visible in my complexion that the terror of Bhai Sahab was not on me. Bhai Sahab sensed it. His intellectual mind was very sharp. If you have passed this year and came first in the rank, then you have got your brain. But brother, pride is not of big and big. What is your personality? You must have read the condition of Ravan in history. What lesson did you take from his character, or just read? महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं, असल चीज है बुद्धि का विकास। He said just passing the exam is not a thing, it is the real thing. Development of intelligence. जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण
भूमंडल का स्वामी था। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बड़ा हुआ है, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन हैं। रावण चक्रवर्ती राजा था। संसार के सभी महीप उसे कर देते थे। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नाम निशान तक मिटा दिया। उसे कोई एक चुल्लू पानी देने वाला भी न बचा। आदमी और जो कुकर्म चाहे करे, पर अभिमान न करे, इतराए नहीं। अभिमान किया और दीन दुनिया दोनों से गया। Understand the meaning of what you read. Ravana was the lord of earth. Such kings are called Chakravartis. Nowadays, the expansion of the British rule has increased a lot, but they can't be called Chakravarti. Many nations in the world do not accept British hegemony. They are completely independent. Ravana was the Chakravarti king. All the sages of the world used to do it to him. The great gods used to enslave him. The gods of fire and water were also his servants. But what was his end? Pride was wiped out his name and trace. There is no one left to give him even a single drop of water. A man can do whatever he wants, but he should not be proud. He does not hesitate. Proud and humble went from both the world. शैतान का हाल भी पड़ा ही होगा। उसे यह अभिमान हुआ था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नर्क में ढकेल दिया गया। शाही रूम ने भी एक बार अहंकार किया था, भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा बुरा हाल सिर फिर गया। तब तो तुम आगे पढ़ चुके। यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से पास नहीं हुए। अंधे के हाथ बटेर लग गई, मगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं लग सकती। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशाना पड़ जाता है। इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वह है जिसका कोई निशाना खाली ना जाए। You must have read The Condition of Beast. He was proud that there is no more true devotee of God than him. In the end, it happened that he was thrown from heaven to hell. Shahirum had done arrogance at times. He died begging. You have just passed only one level, and from now on your head has turned. Means you started to proud on yourself. Understand that you did not pass with your hard work. The blind got quail, but quail can be touched only once. It can't be touched again and again. Sometimes, even in the gully danda game, the blind heart gets the target. That doesn't make a successful player. The successful player is the one who never misses any target. मेरे फेल होने पर मत जाओ। मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। जब अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं। 8 हेनरी हो गुजरे हैं। कौन सा कांड किस हेनरी के समय में हुआ, क्या यह याद कर लेना आसान समझते हो? हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा और सब नंबर गायब। सफा चट। सिफर भी ना मिलेगा, सिफर भी हो किस ख्याल में? दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम्स।
कौड़ियों चार्ल्स, दिमाग चक्कर खाने लगता है, आंधी रोग हो जाता है। अभागों को नाम भी ना जुड़ते थे। एक ही नाम के पीछे दोयम सोयम चाहेरूम पंचुम लगाते गए। मुझसे पूछते तो मैं 10 लाख नाम बता देता। Don't go if I fail. You will come to my section, then your teeth will sweat. Means you need more and more hard work. When you chew the iron gram of algebra and geometry and read the history of England, it is not easy to remember the names of kings. 88 Henrys have passed. Do you consider it easy to remember which incident happened in which Henry's time? Henry VII was written instead of Henry VII. Henry VIII was written instead of Henry VII, and all the numbers were disappeared. Not even a clean cipher will be found. Even a cipher. Do you think there are dozens of James, dozens of Williams, and millions of Charles? The mind starts spinning. Sometimes storms becomes a disease. Even the names were not attached to the earth for unfortunates. After the same name, Doyam, Soyam, Chahirum, and Panchum went on applying. If I had asked, I would have told 10 lakh names. और ज्योमेट्री तो बस खुदा ही पनाह। आ बा ज की जगह आ ज ब लिख दिया और सारे अंक कट गए। कोई निर्दयी मुमतहीनों से नहीं पूछता कि आखिर अ ब ज और अ ज ब में क्या फर्क है, और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो। दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है, मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह। मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह, वह तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है। चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डालें, और इसी रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। और आखिर इन बेसिर पैर की बातों के पढ़ने से क्या फायदा। Geometry is just that. God is the only refuge. A J B was written instead of A B J, and all numbers were cut. No one asked these ruthless teachers, what is the difference between A B J and A J B? And why do you kill the students for futile matter? Eat lentils, rice roti, or eat rice dal roti. What is kept in it? But what do these testers care about? They only sees what is written in the book. Want the boys to write alphabets and letters and left this route in the name of education. After all, what is the benefit of reading these nonsense? Explanation. So students, according to this paragraph, the elder brother Sahib was very confused in mathematics and history, and he did not understand how to understand such subjects. So he kept trying to understand the writer also when he was in the same class for 2 or 3 years. He could not understand these subjects by staying in class. So how will
The writer understands means the writer understands when he come to the class. इस रेखा पर वह लंब गिरा दो तो आधार लंब से दुगना होगा। इससे पूछिए, इससे प्रयोजन दुगना नहीं चौगुना हो जाए या आधा ही रहे मेरी बला से, लेकिन परीक्षा में पास होना है तो यह सब खुराफात याद करनी पड़ेगी। Drop that perpendicular on this line. Then the base will be twice the perpendicular. Ask its purpose. Do not double, quadruple, or remain half by my strength. But if you want to pass the examination, then you will have to remember all these mischievous things. कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम का ना हो। कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम का ना हो। अब आपको कॉपी सामने खोले, कलम हाथ में लिए उसके नाम को रोइए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है। इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है और उसके कारोबार में उन्नति होती है। लेकिन इस जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखे? जो बात एक वाक्य में कही जा सके उसे 4 पन्नों में लिखने की क्या जरूरत? मैं तो इसे हिमाकत कहता हूँ। यह तो समय की किफ़ायत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है कि व्यर्थ ही किसी बात को ठूस दिया जाए। हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ भी कहना हो चटपट कह दे और अपनी राह ले, मगर आपको 4 पन्ने रंगने पड़ेंगे, चाहे कैसे लिखिए, जैसे लिखिए, और पन्ने भी पूरे फुल स्केप आकार के। यह छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है? अनर्थ तो यह है कि कहा जाता है संक्षेप में लिखो। समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। ठीक, संक्षेप में 4 पन्ने हुए, नहीं शायद 200, 100-200 पन्ने लिखवाते। तेज भी दौड़िए और धीरे धीरे भी। उल्टी बात है या नहीं? Said, write an essay on punctuality, which should not be less than 4 pages. Now you open the copy in front of you with a pen in your hand. Cry out his name. Who does not know that punctuality is a very good thing? This brings restraint in the life of a man. The affection of others starts on him, and there is a progress in his business. But how to write 4 pages on this small matter? What can be said in one sentence need to be written in 4 pages. I call it idiocy. It is not an economy of time, but a misuse of it to find something in vain. We want the man to say whatever he has to say and go
his own way. But no, you will have to paint, you will have to write 4 pages, even if you type and the pages are full scale size. If this is not Aristides on students, then what is? The meaning is that it's sad. Write in a nutshell. Write in a short essay on punctuality, which should not be less than 4 pages. Well, in short, it took 4 pages or maybe 100 or 200 pages would have been written. Run fast and slow too. It is the opposite. It is it or not? बालक भी इतनी समझ बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी तमीज भी नहीं। उस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं। मेरे दर्जे आओगे लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे और तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए हो तो ज़मीन पर पाँव नहीं रखते। इसलिए मेरा कहना मानिए, लाख फेल हो गया हूँ लेकिन तुमसे बड़ा हूँ। संसार का मुझे तुमसे कहीं ज़्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूँ उसे गिरह बांधिए, नहीं पछताइएगा। Even a child can understand so many things. But these teachers do not have that much temper. He claims that we are teachers. They claims that we are teachers. If you come to my level, dear, then all these hard works you will have to be rolled. And then the price of flour and pulse will be known. If you have come top in this rank, then do not keep your feet on the ground. So take my words for it. I have failed a millions, but I am older than you. I have more experience in the world than you. Whatever I say, tie it down. You will not regret it. Explanation. Elder brother Sahib did not find any subject interesting. He was hardworking, but he was not in his nature to understand the subjects carefully. The writer was younger than him, and he always worried that his younger brother was in this. Bhai Sahab always used to give speeches to him to make him understand how to understand difficult subjects. स्कूल का समय निकट था। नहीं ईश्वर जाने यह उपदेश माला कब समाप्त होती। भोजन आज मुझे निस्वाद लग रहा था। जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाएं। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे भयभीत कर दिया। स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताज्जुब है। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। खेलकूद का कोई अवसर हाथ से न जाने देता। पढ़ता भी मगर बहुत कम, बस इतना कि रोज टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील ना होना पड़े। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वह फिर लुप्त हो गया और फिर चोरों का सा जीवन कटने लगा। स्कूल टाइम वॉज नियर। God
doesn't know when this sermon would end. The food seems untasty for me today. When it is being scorned, when you pass, then if you fail, then perhaps life itself may be taken. The horrific picture that Bhai Sahab had drawn of his class studies terrified me. Didn't leave school and ran home. That is a surprise, but despite so much disdain, my distaste for books remained the same. Don't let any opportunity to jump your hand in my hands. Reads too, but very little is enough that the task is completed every day and there is no need to be insult in the ranks. The confidence that had been created in himself was lost again, and then life like a thief started being cut. फिर सालाना इम्तिहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हुआ और भाई साहब फिर फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत नहीं की, पर ना जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। मुझे खुद अचरज हुआ। भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया, कोर्स का एक एक शब्द चाट गए। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर से उधर, 6 बजे से 9:30 तक स्कूल जाने से पहले मुद्रा कांतिहीन हो गई थी, मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। Then there was an annual examination and some such coincidence happened that I had passed again and brother Sahib failed again. I didn't try very hard, but I don't know how I came out on top. I myself was surprised. Brother did his hard work. Every word of the course was licked. Here till 10 o'clock in the night, there from morning till 4, before going to school from 6 to 9:30. The currency had became, sorry, the fees has became dull. But the poor people, Bhai Sahab, fail. I felt pity on them. नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े और मैं भी रोने लगा। When the result was narrated, he cried. I started crying too. अपने पास होने की खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख ना होता, लेकिन विधि की बात कौन टाले। The joy of being near you as halved. If I too had failed, my Bhai Sahab would not have felt so much pain. But who should avoid the matter of law? मेरे और भाई साहब के बीच में अब केवल एक दर्जे का अंतर रह गया। मेरे मन में कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब एक साल और फेल हो जाएं तो मैं उनके बराबर हो जाऊं, फिर वह किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे। लेकिन मैंने इस विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला। आखिर वह मुझे मेरे हित के विचार से ही डांटते हैं। मुझे इस वक्त अप्रिय लगता है अवश्य, मगर यह शायद उनके उपदेशों का ही असर है कि मैं दनादन पास होता जाता हूँ और इतने अच्छे नंबरों से। Now there
was only one more level difference between me and Bhai Sahib. A devious feeling arose in my mind that if Bhai Sahib fails one more year, then I should be equal to him. Then on what basis will he able to insult me? But I threw this thought out of my heart by force. After all, he scolds me only because of my interest. I feel unpleasant at the moment, of course, but it is probably the effect of his teachings that I would have passed every day, and with such good numbers. अब भाई साहब कुछ नरम पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद अब वह खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, या रहा भी तो बहुत कम। मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी। मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं पास ही हो जाऊंगा। पढ़ूं या ना पढ़ूं, मेरी तकदीर बलवान है। इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था, वह भी बंद हुआ। मुझे कनकोई उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया था और अब सारा समय पतंगबाजी की ही भेंट होता था। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता और उनकी नज़र बचाकर कनकोई उड़ाता था। माझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां आदि समस्याएं सब गुप्त रूप से हो जाती थी। मैं भाई साहब को यह संदेह ना करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नज़रों से कम हो गया है। Now Bhai Sahib had softened a lot, even after getting the opportunity to scold me several times. He acted patiently. Perhaps now he himself was beginning to understand that he did not have the right to scold me, or at least he did. My independence also increased. I started taking undue advantages of his tolerance. I had such an impression that I will pass, study or not. My luck is strong, so because of fear of Bhai Sahab, whatever I used to study, it also stopped. I had developed a new hobby of flying kites, and now all the time I was gifted to kite flying. Still, I used to respect my brother and used to fly by saving his eyes. Problems such as making the thread, tying the thread, preparing for kite tournament, etc., were all solved secretly. I did not want to let Bhai Sahib suspect that his respect and consideration has diminished in my eyes. Explanation. According to this paragraph, the author did not get any congratulation from elder brother Sahib. But now the fear of the name of the Bhai Sahib in the mind of the writer he was no more, and now he started playing freely. Bhai Sahib also hesitated a bit to say something to the author. एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर मैं कनकोआ लूटने बेहताशा दौड़ा जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला आ रहा था। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। बालकों की पूरी सेना लगे और झाड़दार बांस लिए
इनका स्वागत करने को दौड़ी आ रही थी। किसी को अपने आगे पीछे की खबर न थी। सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे, जहां सब कुछ समतल है, न मोटर कारें हैं, न ट्राम, न गाड़ियां। One day in the evening, I was running wildly away from the hostel to rob a kite. The eyes were towards the sky and the mind towards the celestial wanderer who was slowly swinging towards the fall, as if a soul was coming out of the heaven and going to accept new sanskars from a detached mind. The whole army of boys was running to welcome them with rugs and bushy bamboos. No one knew about his front and back. Everyone was flying with a kite, where everything is flat. No motor cars, no trams, no vehicles. I suddenly had an encounter सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वहीं हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, इन बाजारी लौंडों के साथ थैले के कनकोई के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज नहीं कि अब नीची जमात में नहीं हो, बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो और मुझसे केवल एक दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। I suddenly had an encounter with my brother, who was probably returning from the market. He held his hand there and said furiously. He held my hand there and said furiously, "Are you not ashamed of running for the snail and with these market boys? You also have no idea that you are no longer in the lower caste, but have come to the 8th class and are only one rank below me. After all, a man should take care of his position." एक जमाना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितने ही मिडिलचियों को जानता हूँ जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट हैं। कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं। बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती में काम करते हैं और तुम उसी 8वें दर्जे में आकर बाजारी लौंडों के साथ कनकोई के लिए दौड़ रहे हो। There was a time when people passed the 8th rank and became Nayab Tahsildar. I know many middle class people who are today top ranked deputy magistrates or superintendents. How many people of the 8th tribes are leaders and editors of newspaper? Great scholars work under their subordinate, and you are coming in the same 8th class and running with lower standard boys for the kite. मुझे तुम्हारी इस कम अकली पर दुख होता है। तुम ज़हीन हो, इसमें शक नहीं, लेकिन वह ज़ेहन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले। तुम अपने दिल में समझते होंगे मैं भाई साहब से महज एक दर्जा नीचे हूँ और अब उन्हें मुझको कुछ कहने का हक नहीं, लेकिन यह तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और चाहे आज तुम मेरी जमात में भी आ जाओ और परीक्षकों का यही हाल है, तो निसंदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे
और शायद 1 साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओ, लेकिन मुझ में और तुम में 5 साल, जो 5 साल का अंतर है, उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। I feel sorry for your law intelligence. You are the soul of no doubt about it. But what is the use of the soul that kills your self-pride? You will understand in your heart I am just one rank below, brother, and how I have no right to tell you anything, but it is your fault. I am 5 years older than you, and even if today you come to my tribe in my class, and this is the condition of the examiner, then undoubtedly next year you will be equal to me, and maybe after a year you will be surpass me. But in me and in you the 5 years, what is the difference between you? Even God cannot erase it. I am 5 years older than you and always will be. मुझे दुनिया का और जिंदगी का जो तजुर्बा है, तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते, चाहे तुम MA और D फिल और D लिट ही क्यों ना हो जाओ। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। You can't match the experience of the world and life that I have, even if you are an MA and D lit and MPhil. Understanding does not come from reading books, it comes from seeing the world. हमारी अम्मा ने कोई दर्जा नहीं पास किया और दादा भी शायद 5वीं-6ठी जमात के आगे नहीं गए, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ लें, अम्मा और दादा को हमें समझने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा, केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज़्यादा तजुर्बा है और रहेगा। अमेरिका में किस तरह की राज व्यवस्था है और 8वें हेनरी ने कितने ब्याह किए और आकाश में कितने नक्षत्र हैं, ये बातें चाहे उन्हें ना मालूम हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिसका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज़्यादा है। Our Amma did not pass any rank and Dada also probably did not go to the 5th, 6th class. But even if both of us study the knowledge of the whole world, Amma and Dada will always have the right to explain to us, not only because they are our creator, but because they have and will have more experience in the world than us. He may not know what kind of polite in politics in America and how many marriages Henry the Eighth took and how many stars are in the sky, but there are thousands of such things of which they knows more than us and you. दैव ना करे आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे। दादा को तार देने के लिए के सिवा तुम्हें और कुछ ना सूझेगा, लेकिन तुम्हारी जगह दादा हो तो किसी को तार ना दे, ना घबराएं, ना बदहवासों। पहले खुद मर्ज पहचान कर इलाज करेंगे, उसमें सफल ना हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज है, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीना भर कैसे चले। जो कुछ दादा भेजते हैं उसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं और फिर पैसे पैसे को मोहताज हो जाते हैं। नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं, लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं उसके आधे में दादा ने
अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेक नामी के साथ निभाया है और कुटुंब का पालन किया है, जिसमें सब मिलकर 9 आदमी थे। God forbid, if I get sick today, your hands and feet will swell. You will not understand anything other than giving a telegram to Dada. But if Dada is in your place, then don't write anyone, don't panic, don't get mad. First, we will identify, he will identify and treat himself. If he do not succeed in it, then he will call a doctor. Illness is a big deal. You don't even know how to spend a month's expense for a month. Whatever Dada sends, we spend it up to 20-22 days, and when we become averse to money, the breakfast stops. The washerman and the barber The washerman and the barber start scolding, but half of what we and you are spending today. Dada has spent a large part of his life with honor and good name and followed the family in which altogether there were 9 men. अपने हेडमास्टर साहब को देखो, एमए हैं कि नहीं, और यहाँ के एमए नहीं, ऑक्सफोर्ड के 1000 रुपये पाते हैं, लेकिन उनके घर का इंतजाम कौन करता है? उनकी बूढ़ी माँ। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई। पहले खुद घर का इंतजाम करते थे, खर्च पूरा ना पड़ता था, कर्जदार रहते थे। जब से उनकी माताजी ने प्रबंध अपने हाथ में लिया है, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई है। तो भाईजान, यह गुरूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और आप स्वतंत्र हो। Look only at your headmaster. MA are they are not there or not, and here is MA no of Oxford, 1000 rupees, but who takes care of their house? His old mother. Headmaster's degree has become useless here. Earlier, he used to arrange for the house himself. Expenses were not enough. Debtors lived. Ever since his mother has taken over the management, as Lakshmi has entered the house. So, brother, take out this pride from your heart that you have come near me and are free now. मेरे देखते तुम बेराह ना चल पाओगे। अगर तुम यूं ना मानोगे तो मैं थप्पड़ दिखाकर इसका प्रयोग भी कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही हैं। Seeing me, you will not be able to walk without help. If you do not agree like this, then I can also use it by showing a slap. I know you are taking my words as poison. मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। मैंने सजल आंखों से कहा, हरगिज नहीं। आप जो कुछ फरमा रहे हैं वह बिल्कुल सच है और आपको उसकी कहने का अधिकार है।
I really felt my own smallness today and my reverence for Bhai Sahab grew in my heart. I said with bright eyes, not at all. Whatever you are saying is absolutely true, and you have a right to say it. Explanation. Students, according to this last paragraph, the author wants to tell us that no matter how good we are in our studies, we should never disdain our elders because their experiences is the biggest lesson for our life, and elders never reveal the shortcomings in their lives, even though we have to understand. I hope you like my translation. If you like my translation, please write in comments. Thank you.